Hope I am audible to you clearly. I hope I am audible to you clearly. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Please write yes in the comment box if I am audible. Please write yes in the comment box if I am audible to you. If I am audible, please write yes in the comment box. Okay, register gaming, yes sir. रजिस्टर गेमिंग कौन है? कौन सी गेमिंग कर रहे हो भाई आप? बहुत ज़्यादा गेमा कर रहे हो आप? कौन है ये गेमिंग वाला? ये कहाँ से आ गया? So today we are going to see another chapter from your pharmacology, and that is nothing but the opioidal analgesic. आपका सिनोनिम क्या है? रजिस्टर्ड गेमिंग. व्हाट इज योर सिनोनिम? रजिस्टर्ड गेमिंग. आपका सिनोनिम क्या है? Okay, good evening to all, and today we are going to see another chapter from your pharmacology, that is nothing but the opioidal analgesics or narcotic analgesics or central analgesics. So opioid analgesics or also known as a central analgesics or also known as a narcotic analgesics. So these are the drug opioid okay, so opioid analgesics or central analgesics or narcotic analgesics or central analgesics or opioidal analgesics. Now these are the three synonyms. ये तीनों क्या है? synonyms है. opioidal analgesics or central analgesics or narcotic analgesics. These are the drugs which will relieve your pain and will decrease your pain with the producing hypnosis or with the producing the euphoric effect. So they will interact with the opioidal receptor. So that's why they are known as opioid analgesics. They will decrease your pain acting on central nervous system. They will decrease your pain by interacting with the opioid receptors, and that's why they are known as opioidal analgesics or central analgesics. And they will produce a sleep. They will produce a drowsiness, and that's why they are known as narcotic analgesics. Narcosis means sleep, and narcosis means sleep. So we are going to see this opioidal analgesics or central analgesics or narcotic analgesics. All they are the synonyms. Okay, I hope I am audible you clearly and you are able to see the screen. Okay, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट. नमस्कार बाबा जी. बाबा जी को मेरा नमस्कार. लेकिन बाबा यहाँ पे कैसे आप? बाबा जी को मेरा नमस्कार. बाबा जी यहाँ पे आप कैसे है? मतलब बाबा जी यहाँ पे कैसे आ गए? बाय मिस्टेक आ गए या फिर इंटेंशनली आ गए? बाबा जी कैसे आ गए यहाँ पे? आप तो जेल में हो ना. जेल से कब छूटे, है ना? बाबा जी जेल में है, जेल से कब छूटे आई डोंट नो. बाबा जी यहाँ पे कैसे आ गए आप? बाय मिस्टेक आ गए या फिर मैंने इंटेंशनली आपका यहाँ पे फोटो लगाया? बाबा जी आई एम सॉरी, बट बच्चों को एक्सप्लेन करना है मुझे, तो मैंने आपका यहाँ पे फोटो लगा दिया. तो सॉरी बाबा जी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है. सो ये बाबा जी का नाम आपने सुना होगा. इनका नाम है बाबा आसाराम जी. आसाराम बापू है इनका नाम. कौन से बापू भाई? आसाराम बापू. फिलहाल तो ये जेल में है. नाउ दिस बाबा इज इन अ जेल, है ना? बाबा जी जेल में है. तो यहाँ पे उनका चेहरा देखिए जरा आप, है ना? कैसा खतरनाक चेहरा है यहाँ पे. देखो ये चेहरा, ये देखो आंखों के नीचे क्या है. ये आंखों के नीचे देखो, ये आंखों के नीचे देखो उनके बाबा जी. बाबा जी बहुत खतरनाक थे. आंखों के नीचे देखिए
और बाबा की आंखों में देखिए, बाबा के आंखों में आपको समंदर दिखाई देगा। बाबा की आंखों में आपको क्या दिखाई देगा? समंदर दिखाई देगा। और बाबा की आंखों में आप डूब जाओगे। आप बोल रहे, आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या ड्रामा चल रहा है। एक्चुअली इट्स नॉट अ ड्रामा, है ना, ये ड्रामा नहीं है। ये बाबा जी जो थे वो आपके आसाराम बाबा जी वाज मॉर्फिन एडिक्ट, ही वाज मॉर्फिन एडिक्ट। तो दैट्स वाई ये बाबा जी का नाम यहाँ पे, बाबा जी का फोटो यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे लगाया मैंने ये मॉर्फिन का प्लांट, राइट। यहाँ पे यहाँ पे क्या है? मॉर्फिन का प्लांट। एक टाइम था कि हर एक घर में ये बाबा जी का फोटो था, लेकिन बाबा जी आजकल कहाँ पे है? बाबा जी का मुक्काम पोस्ट है जेल में, ऑर्थरोड जेल। आजकल फिलहाल बाबा जी का मुक्काम पोस्ट है ऑर्थरोड जेल। क्यों है भाई? है ना, वो है ना, है ना, वो रेप केस में अंदर है बाबा जी। बाबा जी इन जेल इन रेप केस, राइट। तो देखो बाबा जी का फोटो इसलिए लगाया कि बाबा जी के आंखों के नीचे देखिए, यू विल सी दिस बिलो द आईज ऑफ दिस बाबा। एंड बाबा जी के आंखों में भी देख सकते हो, बाबा जी के आंखें में क्या है? पिन पॉइंट पिपिल। बाबा जी की आंखें क्या है? पिन पॉइंट पिपिल। So this so-called Baba Asaram Bapu was using a morphine, was a morphine addict, and he was using a morphine. So always he was in a delirium condition. Always there was a meiosis in his face. उसके आंखें कभी भी, आंखों के जो पुतलियां है वो पिन पॉइंट होते थे। तो ही वॉज ऑलवेज हैविंग ए पिन पॉइंट, ही वॉज ऑलवेज हैविंग ए डेलीरियम। तो वो भगवान से बातें करते थे और अचानक से वायलेंट होते थे, अचानक से, है ना। उनको कॉन्स्टिपेशन था, है ना, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता था कभी भी, है ना, कॉन्स्टिपेशन। तो व्हाट आर दीज पिन पॉइंट पीपल? डेलीरियम, कॉन्स्टिपेशन, all they are the symptoms of morphine addict. What is morphine or what is opium? Morphine is a opium alkaloid. This is a opium plant. इस तरीके से ओपियम का प्लांट होता है। ये मोस्टली ये अफगानिस्तान में आता है। तो दिस कल्टिवेशन ऑफ ओपियम इज डन इन मोस्टली इन अफगानिस्तान, बट इन इंडिया आल्सो इन द इन द इन द हिमाचल प्रदेश और हिमालयन एरिया दिस मॉर्फिन इज कल्टिवेटेड। तो मॉर्फिन में in the morphine there was alkaloids. So this Baba was using a morphine. He was addicted to morphine, and he was always you can see on his face there is a pinpoint pupil, pinpoint pupil, right? There is a, है ना, देखो उसके आंखों के नीचे क्या है? symptoms. So this is due to the morphine, addiction of morphine. He was always in a delirium, or he was always like a psycho person, and he was suffering from constipation always, pinpoint pupil, constipation, psychosis. All these are the symptoms of morphine addict, है ना। आजकल बाबा जी का हाली मुक्काम पोस्ट है ऑर्थरोड जेल, ठीक है। बाबा जी के कारण मैंने ये आपको समझने के लिए ये बोला, ठीक है। तो अभी बाबा जी को राम राम बोलते हैं, राम राम बाबा जी, बाय बाय, है ना। चलो अपने काम का देख लो, नहीं तो कार्यक्रम हो जाएगा अपना ही, ठीक है। तो चलो, व्हाट इज पेन, है ना, व्हाट इज पेन? पेन क्या है? पेन मतलब अपना लिखने का पेन नहीं। पेन मतलब आपको जो दर्द होता है उसको पेन, है ना। आपको जो दर्द होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ लगा नहीं है, जिनका कुछ हड्डी टूटा नहीं है, लेकिन उनको भी पेन होता है ना। तो वो रीजन क्या है पेन का, वो अलग बात है ना। आपका कुछ ना कुछ टूटा होगा तभी तो आपको पेन होगा, तो होता होगा ना, तो तभी तो आपने कमरे में बंद कर लिया खुद को। सो व्हाट इज पेन? पेन इज अ अनप्लीजेंट सेंसरी इमोशनल एक्सपीरियंस associated with actual or potential tissue damage, है ना, potential tissue damage, है ना। आपका कुछ ना कुछ टूटा है, किसी का हड्डी टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का दिल टूटा है, तभी जाके पेन हो रहा है ना आपको। तो पेन इज अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। जब आपको
टिश्यू डैमेज हो गया या फिर आपका पैर टूट गया तभी जाके पेन होता है ना. So pain is an unpleasant sensory or emotional experience. So it is not a pleasant, unpleasant, and it can be described in terms of such a damage. There is a pain. Now there are different types of pain. ना कितने टाइप के पेन होते हैं देखो. First pain is nothing but the superficial pain or cutaneous pain. Superficial or cutaneous pain. Superficial or cutaneous. As the name indicates, superficial or cutaneous means क्या? So that pain is arising from the skin or superficial mucous membrane or nerves, and it is felt as a pricking or stinging or burning. जो आपको कुछ चुभा तो उसको बोलते हैं प्रिकिंग. आपको कुछ सुई चुभ है ना, सुई लेके चुभा दिया मैंने आपको, दैट इज अ प्रिकिंग. स्टिंगिंग मतलब क्या, जैसे बिच्छू ने आपको काट लिया, मुझे बिच्छू लड़ गए रे, मेरे पीछे पड़ गए रे, है ना, वो गाना जो है, तो बिच्छू ने आपको डंक मार लिया, दैट इज अ स्टिंगिंग. एंड बर्निंग मतलब आपको मालूम है जलना. सो सुपरफिशियल और क्यूटेनस पेन अराइजिंग फ्रॉम द स्किन और सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन और नर्व एंड फेल्ट एज अ प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड बर्निंग, राइट. तो नेक्स्ट टाइप का पेन होता है आपका, है ना, डीप और नॉन विसरल पेन, ना, डीप पेन और नॉन विसरल पेन, which is now this type of pain is arising from the muscles, joint and ligaments and bones. So whatever pain arising from the muscle, joint, ligament, bone due to inflammation in the muscle, or due to the crack in the bone, or due to the damage in the or wear and tear in the ligament. So that type of pain coming from the muscle, joint and ligament and bone, that type of that pain is known as a deep or non-visceral pain. It is also known as a somatic pain. इसको somatic pain भी बोलते हैं. Also known as a somatic pain. And generally it is caused because of the inflammation. So somatic pain is caused by the inflammation. Now sickening sensation due to autonomic response. That is a deep or non-visceral pain. Superficial pain or cutaneous pain. Deep pain or visceral non-visceral pain. Now third type of pain is there nothing but the visceral pain. Visceral pain, आप बोलेंगे सर आपको नार्कोटिक एनाल्जेसिक आप बोलेंगे सर नार्कोटिक एनाल्जेसिक पढ़ाओ ना, ये पेन क्या पढ़ा हुआ है. लेकिन पेन के टाइप अगर समझ में आया, आपको पेन समझ में आया, तभी जाके टर्मिनोलॉजी समझ में आई. तो विसरल पेन क्या होता है भाई. सो दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द विसरल ऑर्गन. तो दे आर लेस इजिली लोकलाइज्ड, है ना, मतलब आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ से हो रहा है ना. आपकी किडनी में स्टोन है ना. मैंने बोला है कि ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ फार्माकोलॉजी यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम लॉट ऑफ डिसीजेस. आपको बहुत सारे डिसीज होने वाले हैं ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ फार्माकोलॉजी, बिकॉज है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत सारे डिसीज आपको करवाने वाला हूँ ना. तो लेस इजिली लोकलाइज्ड मतलब क्या, यू कैन नॉट लोकलाइज दैट टाइप ऑफ पेन. मतलब आपके किडनी में स्टोन है और वो पेन आपको फेल्ट हो रहा है पेट के अंदर. तो आप बोल रहे हो सर मेरा पेट दुख रहा है, बट पेट नहीं दुख रहा है, आपका किडनी में स्टोन है, इसलिए वो पेन वहां से आ रहा है. सो विसरल पेन मीन्स व्हाट, पेन ड्यू टू द डैमेज और प्रॉब्लम इन द विसरल ऑर्गन. So diffuse the low. This type of pain is diffuse low, and it may be due to spasm of either renal artery or biliary colic, or ischemia, or because of the myocardial infarction, or because of the inflammation like appendicitis or pancreatitis. Pain of peptic ulcer. So that is arising from the visceral organs. So pain arising from the visceral organ known as a visceral pain. ठीक है. तो superficial और cutaneous pain, deep और non visceral pain, देन आता है आपका विसरल पेन. नाउ खतरनाक रेफर्ड पेन, कौन सा है, रेफर्ड पेन. तो रेफर्ड पेन इज अ फोर्थ टाइप ऑफ पेन. सो इट इज अ डीप पेन whether from visceral or somatic origin. So this pain may be arising from either visceral organs or it may be somatic origin, but it is a misinterpreted. ये पेन क्या है, misinterpreted as a coming from some part of your body. Rather it is not coming from actual side, so it is not coming from other side,
actually it is coming from, है ना, the pain is, the origin of pain is one organ and that pain is felt at a different site, है ना। तो पेन तो हो रहा है किडनी में, लेकिन किडनी में स्टोन है, किडनी स्टोन है, वहां से पेन जनरेट हो रहा है, लेकिन वो फील कहाँ पे हो रहा है, स्टमक में। तो नोन एज अ रेफर्ड पेन, किडनी अपना पेन रेफर करेगी इसको, स्टमक को, फॉर द फीलिंग। तो रेफर्ड पेन मीन्स व्हाट, पेन इज ड्यू टू द either from visceral origin or due to the somatic origin, but it is felt at another site, है ना। जहाँ से पेन निकल रहा है, जनरेट हो रहा है, वहाँ पे वो फील नहीं हो रहा है, वहाँ पे नहीं, तो इट इज फीलिंग एट अनदर साइड। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको, सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस। अगर आपको एंजाइना हो गया, तो एंजाइना मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपके हार्ट में है, कोरोनरी आर्टरी में है। तो पेन कहाँ पे हो रहा है, हार्ट में हो रहा है, बट हार्ट पेन विल नॉट बी फील एट अ हार्ट, है ना। सो दैट इज अ रेफर्ड, वो पेन, हार्ट का पेन रेफर होके आपके कहाँ पे आता है, चेस्ट में आता है, एंड आपके पूरे लेफ्ट साइड का जो हाथ हैंड है आपका। सो पेन फ्रॉम द एंजाइना इज फेल्ट एट द बैक साइड ऑफ योर thoracic cage or front side and also on the left hand, so known as a referred pain. So superficial pain or cutaneous pain, deep pain or non-visceral pain, visceral pain, then referred pain, and और एक टाइप होता है भाई साइकोजेनिक पेन और फंक्शनल पेन। साइकोजेनिक पेन और फंक्शनल पेन मतलब ये कोई पेन है ही नहीं, है ना, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, बट, है ना, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्या है कि साइको जैसे कर रहे हो, साइक्रियाटिक इलनेस है आपको, बिकॉज ऑफ दैट आपको लग रहा है कि पेन हो रहा है ना। सो इट इज यूजुअली ए वर्चुअल पेन विच फॉलोज द नो डेफिनेट एनाटॉमिकल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ना, बस आपको फीलिंग हो रहा है पेन का, है ना, दर्द हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है क्या मालूम, है ना। जैसे आप डॉक्टर के मराठीमध्ये बघा, मोस्ट ऑफ द पेशंट डॉक्टरकडे जातात आणि डॉक्टरला म्हणतात सर कसं तरी होत आहे। आता त्या डॉक्टरला आत्तापर्यंत पडलेला सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे, कसं तरी होतंय म्हणजे काय होतंय, कारण डॉक्टरने असं कुठलाही हा शब्द त्यांच्या बुक्समध्ये वाचलेला नाही की डॉक्टरला विचारलं कसं तरी होतंय, काय होतंय नेमकं सांग ना बाबा, ते कसं तरी होतंय, है ना। तर तसं काय सायकोजेनिक पेन म्हणजे त्याला कळतच नाही की काय होतंय। सो इट इज अ वर्चुअल पेन or it is usually a virtue pain which follows no anatomical pattern. So these are the different types of pain. ना पेन होता है cutaneous pain or superficial pain, deep pain or non-visceral pain. Visceral pain means arising from visceral organ. Referred pain मतलब pain is referred from one organ to another side. Psychogenic pain. These are the different type of pain, right? Now the drug which is used to decrease the pain, drug which is used to decrease the pain sensation, आपको जो दर्द हो रहा है, आपको जो तकलीफ हो रही है, आपको जो, है ना, आपको जो दर्द हो रहा है, वो दर्द कम करने की दवा मतलब क्या, ड्रग which is used to decrease the pain, it is known as a analgesic. drug which is used to decrease the pain known as a analgesic. क्या बोलते हैं उसको, analgesic, analgesic, है ना। now analgesics drugs may be are of two type. एनालिसिक ड्रग क्या होते हैं, 2-3 टाइप के होते हैं। एनालिसिक ड्रग में भी ऑफ 2 टाइप। तो फर्स्ट वन इज नोन एज सेंट्रल एनालिसिक्स, सेंट्रल एनालिसिक्स, और आल्सो नोन एज ओपाइडल एनालिसिक्स और नार्कोटिक एनालिसिक्स। सेकंड वन इज नोन एज NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID मतलब एनालिसिक एंटीबायोटिक, है ना। NSAID मतलब क्या, एनालिसिक एंटीबायोटिक। तो दे विल आल्सो डिक्रीज द पेन बट डिपेंड बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म, एंड सेंट्रल एनालिसिक्स they will decrease your pain by acting on a opioidal receptor. Central analgesics are also known as opioidal analgesics or narcotic analgesics, right? So we'll see next, है ना। नेक्स्ट क्या है भाई, देखो पेन पाथवे, पेन आपको कैसे आता है, पेन पाथवेज, there are 2 pathway for pain. So pain mediators, some chemicals, some mediators, some, है ना, some pain
mediators are there, they are released. जैसे during the pain, inflammation and pain, so histamine is released, acetylcholine is released, bradykinin is released, 5-hydroxytryptamine is released. Okay? So histamine, 5-HT, bradykinin, acetylcholine, then prostaglandins and prostaglandins PG. So these are known as the pain mediators. Bradykinin, prostaglandin, acetylcholine, histamine, bradykinin, 5-HT. So they are known as the pain mediators. So they are released and they will cause pain sensation. They will cause irritation on your nerve. That is a pain sensation. Then pain mediators. Then spinothalamic pathway. Spinothalamic pathway terminates in the thalamus and post central gyrus, which is mainly responsible for the localization of pain. तो ये जो केमिकल्स है हिस्टामाइन, एसिटिल्कोलिन, ब्रैडिकाइन, 5-hydroxytryptamine, prostaglandin, these chemicals are released upon the damage to the tissue or some damage to the tissue or some trauma to the tissue or some injury to the tissue. So these chemicals, they will sensitize the nerve ending. They will sensitize the nerve ending, which are a superficial nerve, and the impulse is carried to a brain in the spinothalamic pathway, okay, that terminates in the thalamus and post central gyrus part of your brain, which causes the localization of pain sensation. मतलब ये क्या करेंगे कि डैमेज होने के बाद में ये इरिटेट करेंगे नर्व को, और नर्व अपना सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन को कि कहाँ पे, वो लेके जाएगा थैलेमस में और पोस्ट सेंट्रल गायरस में, वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज होगा एंड लोकलाइज होगा, वहाँ समझ में आएगा पेन कहाँ पे हो रहा है ना। आपको अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो आप कमर में बाम नहीं लगाओगे ना, आप घुटने में ही बाम लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आता है घुटने में पेन हो रहा है, लेकिन पेन का पाथवे क्या है, घुटने में डैमेज हो गया, वहाँ पे रिलीज हो गया केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन, एसिटिल्कोलिन, ब्रैडिकाइन, 5-HT, प्रोस्टाग्लैंडिन, वहाँ पे जो नर्व्स है आपके वो सेंसिटाइज हो गए, वो पेन सेंसिटाइज हो गए, वहाँ से सिग्नल गए आपके ब्रेन को थैलेमस में, पोस्ट सेंट्रल गायरस में, वहाँ पे वो लोकलाइज हो गया पेन सेंसिटाइज, वहाँ तब जाके आपको समझ में आया कि आपको यहाँ पे पेन हो रहा है। ठीक है, तो पेन पाथवे और पेन मेडिएटर्स। Now, analgesics are the drug which decreases your pain. Analgesics are the drug which decreases your pain. They relieve your pain without causing loss of consciousness. Now there are two type of analgesics, simply analgesics, and then इसको आप बोल सकते हैं analgesic antibiotic और NSAIDs. Then second type होता है narcotic analgesic. Narcotic analgesic. Now narcosis means sleep. Narcosis means sleep. So narcotic analgesic means what? They will induce a sleep and they will decrease your pain. So they are also called as opioidal analgesics or central analgesics. In that some are the opium derivative. That's why known as opioidal analgesic like morphine, codeine, Codeine. तो ये जो अल्कोलाइड है ओपियम के डेरिवेटिव है. That's why they are known as opioidal analgesics. And some are the not derivative of opium. They are known as the non-opioid analgesics, or they are the semi-synthetic derivative, you can say. Okay, next is the now opioidal analgesics. Opioidal analgesic मतलब क्या है? Opioidal means they are the derivatives of opium. Opioidal means they are the derivative of opium. तो opium के derivative जो है, opium के alkaloids जो है, so they interact with the opioidal receptors. So they are the interacting with the opioid receptors. उसके होता है ना, there are mu receptor, there are delta receptor, there are kappa receptor, there are delta receptor. So these three receptors are known as a opioidal receptor, mu, kappa and delta. Opioidal receptor, mu, kappa and delta. Now most of the central analgesic drugs or narcotic analgesic drugs or opioidal analgesics, they interact with these receptors. They are the mu receptor agonist or kappa receptor agonist or delta receptor agonist, or some of them are either agonist to one receptor or antagonist to another receptor. तो अभी agonist antagonist क्या है, partial agonist क्या है, ये आपको अगर समझ में नहीं आता
तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज ये ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं अपने. यू जस्ट गो इन द फार्माकोलॉजी रिसेप्टर सेक्शन. आई हैव ऑलरेडी explained you all the things. What do you mean by full agonist? What do you mean by partial agonist? What do you mean by inverse agonist? What do you mean by antagonist? ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं. आई हैव ऑलरेडी डन विद दैट. तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू आर अंडरगोइंग दिस लेक्चर्स, है ना. तो देखो, एगोनिस्ट टू द म्यू रिसेप्टर, फुल एगोनिस्ट टू द म्यू कप्पा एंड डेल्टा. सो एग्जांपल इज अ मॉर्फिन, कोडीन, पेथिडीन, methadone, propoxyphene, neviraphenol and tramadol. Full agonist to these receptors: morphine, codeine, pethidine, methadone, propoxyphene, propoxyphene, neviraphenol, tramadol. These are the full agonists. Some are the partial agonists to these receptors. For example, buprenorphine and meptazinol, pentazocine. These are the partial agonists. Mixed agonist, antagonist. So agonist to one receptor and antagonist to other receptor. Example is nalbuphine, pentazocine and butorphanol. Nalbuphine, pentazocine and butorphanol. These are the opioidal analgesics, right? Now opioidal receptors and their pharmacological effects. So these are the three receptors to which opioidal drug interact. ओपाइड के रिसेप्टर कौन से? ओपाइडल रिसेप्टर एंड देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. मतलब मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, जितने भी ओपाइडल ड्रग है, तो ऑल दिस नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ऑल दिस ओपाइडल एनाल्जेसिक्स, दे विल इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर, दे विल इंटरेक्ट विद दिस रिसेप्टर. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द रिसेप्टर and what is the role. So that's why we are summarized, I have summarized the receptors and their pharmacological effect or the interaction results in. ठीक है, तो देखो पहला है आपका म्यू रिसेप्टर. फर्स्ट वन इज अ म्यू रिसेप्टर, very very important. So all these morphine, codeine and all other drugs, they will interact with the all other narcotic analgesics, they will interact with these receptors. So in somehow, okay. So first receptor is a mu receptor, and a mu receptor is also known as a micro. ऐसा भी ध्यान करते हैं उसको, mu receptor or micro receptor. So it is present in the brain, responsible for the supraspinal and spinal analgesia. So interaction or stimulation of these mu receptor by drugs or endogenous peptides result in the supraspinal or spinal analgesia. So spinal analgesia, then euphoria. What is the euphoria? I have already told you euphoria मतलब क्या? False feeling of well-being. क्या होता है false feeling of well-being? मतलब आपका टंगड़ी टूट गया है ना, फिर भी आप क्या बोल रहे हैं? ऑल इज वेल, है ना. आपके पैर टूटा है और आप बोल रहे हो ऑल इज वेल, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं है ना अपुनिच भगवान है. दैट इज नोन एज यूफोरिया. यूफोरिया मीन्स फॉल्स फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. सपोज है ना, आपने मूवीज में देखा होगा, देयर इज वन मूवी नोन एज अ टैंगो चार्ली. आप बोलेंगे सर आपको मूवी में इंटरेस्ट है क्या? अरे क्यों है मूवी, वो बेचारे इतना पैसा खर्च करके बनाते हैं मूवीज और उसको कोई देखने नहीं जाएगा तो मतलब क्या है ना. वो अलग बात है कि मैं लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड करके देखता हूँ, है ना, वो अलग चीज है. देखो यूफोरिया मतलब क्या है? फॉल्स फीलिंग ऑफ फीलिंग. देयर इज वन मूवी इन द बॉलीवुड नोन एज टैंगो चार्ली. वो भी हमारे ज़माने की मूवी है, तुम्हारे ज़माने की नहीं है. तो मतलब उसमें है अजय देवगन, उसमें है अपना ये सनी देओल का छोटा भाई बॉबी देओल, है ना. उसमें है अजय देवगन, बॉबी देओल और उसमें हीरोइन भी है. ओके, बाकी और भी एक्ट्रेस है, छोड़ दो, ये दो है. तो उसमें क्या होता है कि दे आर ऑल आर सोल्जर, एक मिशन पे होते हैं और वहाँ पे उनके साथी को क्या है कि दुश्मन घेर लेता है, पकड़ लेता है, उसके जीभ काट देता है, कान काट देता है और स्टमक में भी चाकू मार देता है. तो वो चिल्लाता है बहुत, तो उसको पेन डिक्रीज करने के लिए दूसरा एक सोल्जर मॉर्फिन का इंजेक्शन लेके जाता है, लेकिन उसको भी पकड़ लेते हैं, उसको भी मार देते हैं, है ना. तो क्यों मॉर्फिन यूज किया जाता है उसमें? बिकॉज मॉर्फिन इज अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, इट कैन कॉज यूफोरिया. तो मॉर्फिन का इंजेक्शन अगर दे दिया तो उसको 4 भी गोली लगी, 5 भी गोली लगी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा,
because morphine induces the euphoria, false feeling of well-being, सब चंगा सी, all is well. ना 4 गोली लगी फिर भी बोल रहा है बंदा all is well, खतरनाक, एक नंबर, ज्यादा दूर संकट है ना, euphoria. Then so interaction of mu receptor, मतलब those drug which stimulate the mu receptor, so either endogenous peptides or morphine, so induces the spinal analgesia, euphoria, respiratory depression. Respiratory क्या करता है, depression करता है. It will induce a sedation, meiosis, decrease the GIT motility. तो देखो यहाँ पे मैं तो drug which are agonist to mu receptor or drug or endogenous peptide which stimulate the mu receptor can cause spinal analgesia, supraspinal analgesia, euphoria, respiratory depression. They will cause sedation, meiosis, decrease the GIT motility. So morphine causes the constipation, याद रखना है, due to decrease the GIT motility, smooth muscle spasm, then physical dependence, release of prolactin and growth hormone, also causes the nausea and vomiting. So due to interaction with this receptor, so with the drug which are full agonist to this, they will cause these symptoms like analgesia, euphoria, respiratory depression, constipation, sedation, meiosis, है ना, muscle spasm and addiction, release of prolactin, है ना. Again this mu receptor is responsible for the sedation, analgesia, constipation, respiratory depression, truncal rigidity, euphoria and meiosis. These are the effect produced those drug which will stimulate the mu receptor. Now दूसरा होता है कप्पा receptor, mu, kappa and delta. म्यू कप्पा एंड डेल्टा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2020 में कि विच रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनाल्जेसिया कॉज्ड बाय मॉर्फिन, म्यू रिसेप्टर. So again kappa receptor is also responsible for the supraspinal analgesia but up to lesser extent than the mu receptor. Mu सबसे ज्यादा होता है, ठीक है. Then analgesia, sedation, meiosis and decrease the GIT motility but less physical dependence. ये addiction liability कम करेगा. Those drug interact which interact with the kappa receptor they have less addiction liability. मतलब kappa receptor के agonist जो ड्रग है वो addiction ज़्यादा नहीं करेंगे. Those drug which are agonist to the mu receptor they have strong analgesic action plus strong physical dependence, मतलब they will produce a addiction, right? So kappa receptor will produce a less addiction. It can produce a डिस्फोरिया. डिस्फोरिया मतलब क्या, यूफोरिया मतलब फॉल्स फीलिंग ऑफ वेलबींग. डिस्फोरिया मतलब क्या, साइकोसिस लाइक सिम्टम्स, है ना, साइकोमेट्रिक इफेक्ट एंड है ना लाइक दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्फोरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सिया. तो कप्पा रेसेप्टर क्या करता है, बेसिकली इट विल प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, कॉन्स्टिपेशन एंड डिस्फोरिया, मतलब साइकोसिस लाइक सिम्पटम्स. देन डेल्टा रिसेप्टर, देयर आर 3 रिसेप्टर. डेल्टा अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया. इट विल कॉज लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मतलब इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद दिस रिसेप्टर विल कॉज लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, decrease the GIT motility and release of growth hormone and feeding. Responsible for the spinal analgesia, modulation of hormone and neurotransmitter release. तो basically यहाँ पे आपको समझ में क्या आना चाहिए कि what happens with the interaction with the mu receptor. So those drugs which are stimulant to mu receptor, they will induce analgesia, they will produce analgesia, sedation, analgesia, they can cause constipation, respiratory failure, respiratory depression. Then they will induce a truncal rigidity, euphoria and meiosis, right? So interaction with the kappa receptor or drug which are a stimulant to kappa receptor, they will produce a dysphoria, constipation and analgesia. Drug which are a stimulant to delta receptor, they will also produce a spinal analgesia and they will modulate or they will control, they will change the hormone release and neurotransmitter release. तो इसी के ही बेसिस के ऊपर पूरा चैप्टर है आपको
है ना है ना, पूरा चैप्टर इसके बेसिस पे है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी जीपैट में आ चुका है ना। interaction morphine produces the analgesia by interacting with the following receptor principally, ऐसा क्वेश्चन था। तो morphine and other opioidal analgesic drugs, they will interact mostly with the mu receptor and will produce a analgesia। and also जो आपका जो है ना addiction liability है, that is also because of the mu receptor, है ना। kappa receptor less and delta again less। okay, so now we'll see now we'll see the actions of morphine। okay, so ये जो receptors है ना, ये तो receptor तो है, but है ना, there are some peptides, there are some proteins in your body। आपके खुद के बॉडी में कुछ प्रोटीन्स है, आपके खुद के बॉडी में कुछ पेप्टाइड्स है। so which are known as strong opioidal like peptide। they are the peptides which are already present in the brain, which are already present in the body। जैसे for example जब आप बहुत ही गुस्से में होते हो, जब आप बहुत ही गुस्से में हो, इतना गुस्सा है आपको सामने कि उसने आपको चाकू मार दिया, लेकिन आपको कुछ फील नहीं हो रहा है ना। इतना गुस्से में आपको फील नहीं हो रहा है, आप इतने गुस्से में हो, आपने फटाक से दीवार पे मार दिया, आपका हाथ टूट गया, लेकिन आपको कुछ फील नहीं हो रहा है। बिकॉज व्हेन यू आर इन एंगर देयर आर रिलीज ऑफ सम पेप्टाइड्स व्हिच आर स्ट्रॉन्ग और दे आर एज इक्विवेलेंट एज लाइक अ मॉर्फिन, but these peptides are there in the body, they will remain, they are released for a particular seconds। that's why they are having very stringent, they are having very transient action, है ना। मतलब ये पेप्टाइड्स भी इतने ही पोटेंट है, they are these peptides are as potent as morphine, but their action, duration of action is very small for a few seconds, that's why। okay, that's why they are not useful as a drug। ठीक है, तो है ना, जैसे आपको ड्यूरिंग द लेबर पेन, जब बर्थ होता है किसी का, तो उस टाइम पे बहुत ही ट्रिमेंडस पेन होता है। तो दैट वी यूज टू बियर दैट पेन, वी यूज टू फेस दैट पेन बिकॉज ऑफ द एंडोजिनस ओपाइडल पेप्टाइड्स। तो आपके बॉडी में एंडोजिनस ओपाइडल पेप्टाइड्स है। फॉर एग्जांपल नाउ रिसेंटली है ना, वैसे आपके पेप्टाइड्स है बीटा एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डायनोर्फिन, नॉसेप्टिन और ऑर्फेनिन, एंडोर्फिन 1 and 2। so these peptides are present in the body, these peptides are known as opioidal, है ना, these peptides are known as opioidal peptides, endogenous opioidal peptides, they are present in your body and but their action is limited, transient, and that's why they cannot be used as a drug, recently nociptine or nociptine receptor has been found or has been identified, also known as orphanin receptor, so related with the drug reward reinforcement, stress responsiveness, learning and memory, right? now these peptides are strong opiate like analgesic, मतलब क्या, they are equipotent as a morphine, they will interact with the receptors, which receptor? Opioidal receptor। so all these proteins, they are released in the body, they will interact with the mu kappa delta receptor and they will produce analgesia, that's why they are a strong opioid like analgesics, but their duration of action is very small for few seconds। तो ये भी बहुत सारा पेन किलर है, लेकिन वो कम टाइम के लिए है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द endogenous opioidal like peptide, opioid like peptide। so example is nothing but the beta endorphin। so again beta endorphin is a potent analgesic, it is a potent analgesic derived from the pro-opiomelanocortin, it is found in the pituitary gland along with and released along with the acetylation। so this is a strong analgesic but transient action होता है उसका। Enkephalin, again enkephalin is found in the pituitary gland, brain, GIT tract, spinal cord, pancreas, adrenal medulla। Dynorphins, they are widely distributed in the CNS, there are two types, dynorphin A and dynorphin B। Nociptine or orphanin,
So they are the peptide related to behavior and pain modulating effect. Okay, there are distinct from those three above. मतलब नोसिप्टिन क्या है कि ये तीनों से अलग है. लास्ट होता है एंडोर्फिन. They are a tetrapeptide with high selectivity and affinity for the mu receptor. मतलब ये पेप्टाइड्स क्या है कि they are already present in your body. They are released during the pain. That's why you can bear a pain for particular time. ना कुछ सेकंड के लिए आप कितना भी सीवियर पेन हो आप बेयर कर सकते हो. जैसे आप बहुत ही गुस्से में हो, गुस्से में आपने दीवार पे मार दिया है ना, गुस्से में आपका हाथ कट गया, आपको पता ही नहीं चला. तो ड्यूरिंग दैट these peptides are released, but they have a transit action, they have a short action, short duration. That's why you need a opioidal analgesic. So for example, milk and milk like product, milk में और दूध के प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एक पेप्टाइड होता है. इन अ मिल्क और milk and milk like product you have opioidal peptide known as a beta casomorphine. So it is a opioidal peptide present in the milk, beta casomorphine. Now mechanism of action of these opioidal analgesics. ये ड्रग क्या करेंगे? they will interact with these receptors and a mu kappa delta. So opioidal drugs, they will interact with these receptors and they will interact with these receptors. They will act as a stimulant, they will act as an agonist for mu kappa and delta, and they will decrease the pain and analgesia. Pain sensation will be decreased. Mechanism of action of opioidal analgesics. So they will have a dose dependent effect. Either some are the pure agonist, some are the partial agonist, some are the agonist to the kappa, some are agonist to the delta, and some, most of them are agonist to the all. So that's how they will decrease your pain. Okay. So now we'll see the individual drugs. इंडिविजुअल ड्रग में आता है, देखो ड्रग के नाम तो बहुत है आपको, है ना, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, मिथेडोन, पेथिडीन, ब्यूप्रोमॉर्फिन, बिटरफिनॉल, प्रोपायरम, पेंटाजोसिन, नल्वोफिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट. So selectivity of some common opioidal analgesics with the different receptor. Selectivity, कौन किसको, है ना, कौन किसको पकड़ रहा है ना, आपने, है ना, आपको फिक्स होता है ना, जैसे तीन, है ना, आपके तीन दोस्त थे फीमेल फ्रेंड्स, आपके तीन दोस्त थे फीमेल फ्रेंड्स, है ना, तीनों भी आपके दोस्त थे, तीनों भी क्या है, आपके दोस्त है. जैसे म्यू, कप्पा एंड डेल्टा, आपके तीन दोस्त है म्यू, कप्पा एंड डेल्टा, है ना. तो आपको सबसे ज्यादा पसंद है म्यू, है ना, उससे थोड़ा कम पसंद है कप्पा, है ना, म्यू ज्यादा पसंद है. मतलब, है ना, मॉर्फिन क्या है, इट इज अ फुल एगोनिस्ट टू द म्यू रिसेप्टर, इट इज अ हैविंग फुल एगोनिस्ट टू द म्यू रिसेप्टर. So moderately agonist to the kappa, moderately agonist to the delta. Methadone is also full agonist to the mu, no action on kappa, no action on delta. Codeine is having moderate or less agonism to the mu receptor. मतलब it is a less agonist to the mu, less agonist to kappa, and no action on delta. Pure agonist, okay. So remember, pure agonist, morphine, methadone, codeine. They are known as pure agonist. Now next is a partial agonist. कौन सा next कौन सा है? Partial agonist. Pure agonist है, partial agonist. Pure मतलब full agonist. Then partial agonist. So buprenorphine, याद रखना, buprenorphine is a partial agonist. मतलब has a highest activity on a mu receptor. Partial agonistic activity on a mu receptor, है ना. यहाँ पे निगेटिव मतलब क्या है, एंटागोनिज्म एक्टिविटी, एंटागोनिस्ट एक्टिविटी तो कप्पा एंड नो एक्शन ऑन डेल्टा. तो बुप्रेनॉर्फिन इज अ पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, है ना, पार्शियल एगोनिस्ट टू द म्यू रिसेप्टर, एंटागोनिस्ट टू द कप्पा रिसेप्टर. ब्यूटरफिनॉल इज अगेन मॉडरेटली पार्शियल एगोनिस्ट टू द म्यू रिसेप्टर, है ना, फुल एगोनिस्ट टू द कप्पा रिसेप्टर,
no action on a delta. Then propyram is a again moderately partial agonist to the mu receptor, no action on kappa and delta. Now antagonist, antagonist. जैसे पहला है पेंटाजोसिन is an antagonist to the mu receptor. Pentazocine is an antagonist to the mu receptor, but it is an agonist to the kappa receptor. Now kappa receptor को agonist है and also agonist to the delta receptor. Nalbuphine is an antagonist to the mu receptor and a partial agonist to the kappa receptor and agonist to the delta receptor. And so there are different drugs which are having either full agonism or है ना full agonism or partial agonism or antagonism. तो याद रखना है antagonist है ना, nalbuphine क्या है, antagonist है ना, agonist antagonist. तो pentazocine is a antagonist to the mu है ना, but agonist to the kappa receptor ना, यहाँ पे दोनों का agonist है, but यहाँ पे क्या है antagonist. mu के लिए क्या है antagonist, kappa and delta के लिए क्या है agonist. नाल्बुफिन भी क्या है एंटागोनिस्ट किसके लिए, म्यू रिसेप्टर है ना, पार्शियल एगोनिस्ट का है कप्पा का एंड एगोनिस्ट क्या है डेल्टा का. मतलब दीज टू ड्रग्स दे कैन बी यूज्ड एज एंटागोनिस्ट टू द ऑल दिस ड्रग्स, राइट. यू विल सी इंडिविजुअल ड्रग्स. पहले मॉर्फिन अल्कोलॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन मतलब ओपीएम अल्कोलॉइड्स, ऑल दे आर नोन एज ओपीएम अल्कोलॉइड्स. ओपीएम अल्कोलॉइड्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द plant. They are often from the plant known as the Papaverum somniferum family, Papaveracea, and we'll see that in a cognosy. When we'll see the pharmacognosy, at that time I will explain you the detail of the plant. ना यहाँ पे plant का नहीं सोच रहा है, वैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि plant कैसे होते हैं ना. ओपीएम के plant कैसे होते हैं, you can see over here, this is known as a, ये क्या है आपका ओपीएम का plant. This is known as a opium. This is known as a opium, है ना, opium. So opium cultivation, and this one is known as opium poppy. This one is known as opium poppy. इसको they used to give cut on this, so there is a oozing out of latex. That latex is collected and dried, and then from that you are going to get morphine, codeine, thebaine, heroin, etc. etc. These are known as a opium, right? So morphine alkaloids can be divided into two types, or morphine, not morphine, actually opium alkaloids. Opium alkaloids can be divided into two groups. पहला ग्रुप कौन सा है, फिनेंथ्रीन टाइप ऑफ अल्कोलाइड. क्वेश्चन आ चुका है फिनेंथ्रीन टाइप ऑफ अल्कोलाइड. तो तीन रिंग्स देखो यहाँ पे, देयर आर 3 फिनाइल रिंग्स. कौन सा, रिंग 1, यहाँ पे रिंग 2, यहाँ पे कौन सा है रिंग 3. So 3 phenyl ring, that's why phenanthrene ring. So phenanthrene alkaloids, in that you have morphine, codeine, thebaine. Morphine, codeine, thebaine क्या है, phenanthrene alkaloids. याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है भेंडी ना, भेंडी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. phenanthrene सीरीज ऑफ alkaloid, morphine, codeine, thebaine. Okay. Then benzyl isoquinoline type of alkaloid और benzyl isoquinoline सीरीज. इसमें आता है आपका पापावेरिन. कौन सा वेरिन, पापावेरिन. कौन सा पिन, नस्कोपिन. कौन सा सिन, नार्सिन. तो पापावेरिन, नस्कोपिन, नार्सिन, दे आर द बेंजिल आइसोक्विनोलिन टाइप ऑफ अल्कोलाइड. एंड फिनेंथ्रीन में आता है मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन. तो और एक इसमें आता है नार्सिन, सॉरी, उसमें और एक कैटेगरी आता है नार्कोटिन. तो व्हेन विल सी कोग्नोसी, एट दैट टाइम आई विल टेल यू द इन डिटेल. यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि क्या, तो ओपीएम अल्कोलाइड्स, opium alkaloids are classified into 2 major classes. First one is a यहाँ पे opium होना चाहिए. Opium alkaloids are classified into 2 types, phenanthrene alkaloids and then benzyl isoquinoline alkaloids, right. In the phenanthrene, morphine, codeine, thebaine. In the benzyl isoquinoline, papaverine, nascopin and narsin. So you see here is the structure of morphine. तो अपन ये डिटेल में अपन केमिस्ट में देखेंगे. तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, राइट. नाउ मॉर्फिन एंड अदर opioidal analgesic interact with the mu receptor
kappa receptor and delta receptor. So mu receptor is responsible for the sedation, analgesia, constipation, respiratory depression, truncal rigidity, euphoria and meiosis. So morphine produces the, यहाँ पे देखो morphine are the, morphine क्या है, it is a full agonist to the mu receptor. That's why morphine produces the sedation, analgesia, constipation, respiratory depression, truncal rigidity, euphoria and mitosis. Because of the euphoria, there is a worst drug of abuse. ये क्या है, drug of abuse है. Morphine का addiction क्यों होता है? Because morphine produces the euphoria in presence of pain as well as in absence of pain. That's why it is a worst drug of abuse. Now interacting with the kappa receptor, it produces a dysphoria, मतलब psychomimetic effect, मतलब psychiatric effect, then constipation, then analgesia, है ना. By interacting with the delta receptor, causes the spinal analgesia, modulation of hormone and neurotransmitter release, right? So in short, the receptors of opioids, mu, kappa and delta. Now morphine, morphine क्या है? Morphine is alkaloid obtained from the opium plant belonging to Papaver family, है ना, Papaver somniferum family, Papaver. So morphine, it is used as a either hydrochloride salt or morphine sulfate, है ना. दो आता है मॉलिक्यूल, morphine sulfate, morphine hydrochloride. मतलब morphine is used as a hydrochloride salt or sulfate salt because morphine क्या है? It is a free base, it is a no solubility, is a lipid soluble, not a water soluble. So its salt are made. Various actions of morphine are described below. मतलब एक्शन क्या है मॉर्फिन के? तो बाबा है ना, बाबा रणछोड़ दास ने, बाबा कौन से, आसाराम बाबा क्या करते थे? मॉर्फिन के एडिक्शन थे, है ना, मॉर्फिन एडिक्ट थे. सीनियस, व्हाट इज द एक्शन ऑफ मॉर्फिन ऑन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सो एनाल्जेसिया, यहाँ पे एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया मतलब क्या? एनाल्जेसिया मतलब रिलीविंग ऑफ पेन सेंसेशन, है ना, नो पेन सेंसेशन और डिक्रीज द पेन सेंसेशन. So morphine by interacting with the mu kappa delta, so it will produce analgesia, is an increase in the pain, है ना. So morphine produce analgesia by increasing the pain threshold. Pain threshold मतलब क्या? मैंने आपका हाथ दबाया, से मान लीजिए हाथ है या उंगली है, उंगली टेढ़ी कर दी तो कुछ टाइम तक आपको कुछ नहीं महसूस होता, मतलब यू कैन बियर. बट ज्यादा टेढ़ी कर दी तो जितना ज्यादा पेन होता है. सो द पेन थ्रेशोल्ड मतलब क्या है ना? पेन थ्रेशोल्ड मतलब क्या है? द मोमेंट एट विच देयर इज अ ऑकरेंस ऑफ पेन, है ना. सो इट विल इंक्रीज द पेन थ्रेशोल्ड, मतलब क्या? जो आपको 2 सेकंड में पेन होने वाला था तो मॉर्फिन की वजह से आपको वो पेन 10 मिनट के बाद होगा, मतलब इट विल इंक्रीज द पेन थ्रेशोल्ड, है ना, thereby reducing the perception of pain, and this action is assisted by the feeling of pain being, that is euphoria. Now, it will decrease the pain, it will produce analgesia and euphoria. Morphine induces the analgesia without causing the motor incoordination. Morphine produces the analgesia without causing the muscle incoordination. Moderate doses will also reduce the continuous and dull type of pain. Larger doses, in large doses they can reduce the sharp and intermittent pain, है ना. अभी ये क्या है? डल पेन, है ना, शार्प पेन, इंटरमिटेंट पेन. यू कैन सर्च इन ऑन द गूगल एंड यू कैन, है ना. सब कुछ मैं ही नहीं बोल सकता आपको, कि आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए, राइट. सो intermittent sharp pain caused by trauma and visceral pathology. So in a smaller doses they can decrease dull pain, है ना, dull and continuous pain, but in a larger doses they can decrease the sharp and intermittent pain caused by trauma and visceral pathology. Now morphine will produce a euphoria. कौन सा रिया? यूफोरिया. रिया मतलब कौन सा? रिया चक्रवर्ती नहीं. कौन सा रिया भाई? यूफोरिया. रिया चक्रवर्ती नहीं, उसके चक्कर में मत पड़ो. उसके चक्कर में सुशांत सिंह राजपूत ने खुद का लाइफ खराब कर दिया, तो आप भी उसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है. यूफोरिया, यूफोरिया विल प्रोड्यूस, ना, मॉर्फिन विल प्रोड्यूस यूफोरिया. तो सेडेशन एंड हिप्नोसिस, यूफोरिया, sedation, hypnosis are produced by morphine. So morphine produces the euphoria, sedation, hypnosis. They produce the sense of well-being, that is euphoria.
which eliminate the normal fear, panic, withdrawal and flight response to the pain. मतलब आपको सब लग रहा है कि एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल, है ना, ऑल इज वेल, सब चंगा सी, तो मतलब क्या, तो इट विल eliminate your fear about the pain, panic withdrawal and flight response to pain. पेन जो हो रहा है उसका फियर रिमूव कर देगा, एलिमिनेट कर देगा यूफोरिया. It can produce euphoria even in absence of pain, and that's why morphine is that property of morphine will make morphine as a worst drug of abuse. Morphine produces the euphoria in absence of pain also, and that's why this property make morphine a worst drug of abuse. तो मॉर्फिन का एक बार लत लगा है तो आपका लाइफ खराब है ना, फिर बाद में गाते रहना बेखयाली में तेरा ही ख्याल आता है ना. जैसे आपका कबीर सिंह, तो कबीर सिंह जैसे मॉर्फिन ले लिया शादी के दिन, अल्कोहल और मॉर्फिन को मिक्स करने लगे भाई, है ना. तो मॉर्फिन और अल्कोहल ले लिया कबीर सिंह ने, तो गया डायरेक्टली कोमा में. तो कोमा में गया तो लाइफ खराब हो जाएगा, है ना, इतना इजी नहीं है. तो मॉर्फिन खतरनाक है, तो इसीलिए. और ये मॉर्फिन का सब क्या होता है, सब मॉर्फिन का यहाँ पे ट्रैफिकिंग होता है ना. पाकिस्तान से आता है ये मॉर्फिन, अफगानिस्तान में बनता है, वहां से स्मगलिंग होता है. लार्जर डोज कैन इंड्यूस अ स्लीप रिसेंबलिंग टू नॉर्मल स्लीप. नॉर्मल स्लीप की जैसे स्लीप लाता है. मॉर्फिन विल डिप्रेस योर रेस्पिरेटरी सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Morphine will depress respiratory center. Morphine will depress the respiratory center and cup center. By depressing your CNS, morphine will depress respiratory center and cup center. So that's why morphine and its analogs are used as a cup suppressant. So morphine क्या करता है, respiratory center को depress कर देता है. That's why it is a respiratory suppressant or depressant, not used in the head injury. So morphine causes depression of respiratory center, and that's why it is not used or contraindicated in case of head injury. अगर हेड इंजुरी है तो उसमें मॉर्फिन एज अ पेन किलर नहीं यूज करना है, बिकॉज हेड इंजुरी में पहले ही रेस्पिरेशन कम हो गया और उसमें भी ये रेस्पिरेटरी सप्रेसेंट है, तो मतलब वो पेशेंट मर सकता है. तो मॉर्फिन इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ हेड इंजुरी, यहाँ पे याद रखो. अगेन इट इज अ कप सेंटर सप्रेसेंट, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ कप सप्रेसेंट. तो ये तो नहीं यूज करते, लेकिन कोडीन इज यूज्ड एज अ कप सप्रेसेंट. उसका सेमिस्टिक डेरिवेटिव है डेक्स्ट्रोमिथोफार्म. आजकल जो कप सिरप है उसमें सभी क्या है, डेक्स्ट्रोमिथोफार्म. दैट इज अ सेमिस्टिक डेरिवेटिव ऑफ कोडीन. मॉर्फिन डिप्रेसेस द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड कप सेंटर and also stimulate the vagal center. मतलब क्या, it will stimulate the vagus nerve, means acetylcholine release, oculomotor center, and also stimulate the CTZ. मतलब क्या करेगा, CTZ को stimulate किया, chemoreceptor trigger zone को, तो क्या करेगा, emesis. What is the effect on respiration? So direct depression of respiratory center and decrease in the sensitivity of carbon dioxide and up to the chemoreceptor. कीमोरिसेप्टर को कार्बन डाइऑक्साइड का सेंसिटिविटी कम करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है, एंड दैट्स व्हाई है ना, इट इज अ रेस्पिरेटरी सप्रेसेंट. नेक्स्ट क्या है, मॉर्फिन है ना, इट विल प्रोड्यूस अ चेंकी स्ट्रोक रेस्पिरेशन. मॉर्फिन विल प्रोड्यूस अ चेंकी स्ट्रोक रेस्पिरेशन. क्विक टॉक्सिक डोज ऑफ मॉर्फिन. चेंकी स्ट्रोक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन बहुत ही स्लो हो जाता है, that is due to quick toxic dose of morphine, and breathing is entirely maintained by hypoxic drive. Now in case of morphine poisoning, breathing is entirely maintained by hypoxic drive through the chemoreceptor aorta and carotid body. So in case of morphine poisoning, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देना है. अगर ऑक्सीजन देंगे आप तो हाइपोक्सिक ड्राइव क्या होगा है ना, वो नल हो जाएगा और पेशेंट मर भी सकता है. मॉर्फिन कॉजेज द पिन पॉइंट पिपिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉर्फिन प्रोड्यूसेस द पिन पॉइंट पिपिल ड्यू टू एक्शन ऑन इरिंगर बस्तापाल न्यूक्लियस ऑफ द oculomotor nerve.
Morphine act on this oculomotor nerve, aiding or vestibule nucleus of the oculomotor nerve and produces the pinpoint pupil. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मॉर्फिन का इफेक्ट क्या है, पिन पॉइंट पिपिल, नोशिया एंड इमेसिस, है ना, नोशिया एंड इमेसिस। हेलो, हाँ बोला, हाँ लेक्चर मध्ये बोला ना, काही इम्पॉर्टंट आहे का, मी करू कॉल, मी करतो कॉल. Okay, by stimulating the chemoreceptor taker zone produces the emesis and it can be abolished by nalorphine. मतलब क्या, emesis produced by the morphine can be reversed by nalorphine. Nalorphine क्या है, it is a antagonist to the mu receptor, and it can be reversed by prochlorperazine, metoclopramide and haloperidol. Now cup suppressant action of morphine, so depresses the cup reflexes by direct depressing the cup center. Vagal stimulation caused by morphine and release of acetylcholine can cause bradycardia, increasing the reflex excitability of spinal cord, and also produces the release of ADH, an antidiuretic hormone. Right now, on the gastrointestinal tract, what is the actions of morphine? Because बाकी सभी ड्रग के actions नहीं देखने वाले, because actions of morphine as a discussed as a prototype of these drugs. So actions of morphine are discussed in the detail and additional and specific other actions of other drugs will be discussed. So what is the action of morphine on GIT? GIT के ऊपर क्या करता है? So morphine decreases the peristalsis and produces the constipation. Morphine क्या करता है? Constipation. Morphine will produce a constipation and also increases the, morphine causes the vigorous spasm of smooth muscles and anal sphincter. तो आपका जो स्मूथ मसल्स है जीआईटी का, जो एनल स्फिंक्टर है उसका क्या करता है, स्पाज्म करता है, एंड ड्यू टू विगरस स्पाज्म ऑफ इंटेस्टिनल मसल एंड एनल स्फिंक्टर, कुछ मॉर्फिन एडिक्ट्स इसको बोलते हैं किक. तो दैट पर्टिकुलर विगरस कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ जीआईटी स्मूथ मसल्स एंड स्पाज्म and anal sphincter, that is one of the desired effect by a morphine addict. It is used to reduce the biliary colic. मतलब जो बाइल डक्ट है उसका अगर स्पाज्म हो गया तो उसका जो पेन है उसको बोलते हैं बाइलरी कोलिक. यूज टू रिड्यूस द बाइलरी कोलिक बिकॉज ऑफ द इट्स एनालिसिस एक्शन, बट it can not an underlying cause will be exacerbated. बिकॉज मतलब एक साइड पे बाय इट्स पेन किलर एक्शन इट विल डिक्रीज द पेन बिकॉज ऑफ द पेन किलर एक्शन, बट मॉर्फिन विल आल्सो कॉज अ स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल, तो द रूट कॉज विल बी एक्सरबेट. मॉर्फिन है ना, एक साइड पे पेन डिक्रीज करता है बाइलरी कोलिक का, और एक साइड पे स्पाज्म करता है. दैट्स व्हाई इन द माइस, देखो माइस है ना, एक चूहा ले लो वाइट ना, अल्बिनो माइस ले लो, उसमें मॉर्फिन अगर देंगे आप, so in the mice morphine produces the severe spasm of anal sphincter, है ना, उसका एनस का स्फिंक्टर जो है उसका स्पाज्म करता है, एंड दैट रिजल्ट इन द इरेक्शन ऑफ टेल. इरेक्शन ऑफ टेल मतलब चूहे का पूंछ खड़ा हो जाएगा. इरेक्शन ऑफ टेल, चूहे का पूंछ क्या होगा, खड़ा हो जाएगा. दैट इज नोन एज अ स्ट्रॉब्स टेस्ट. स्ट्रॉब्स टेस्ट. Morphine produces the positive Stropes test in the mice. This was question in GPAT 2023. ये 2023 में आया था. Stropes test is given positive by your morphine. Morphine produces the erection of tail. Erection of tail in the mice known as a Stropes test. के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Other actions of morphine are smooth muscle. So in the smooth muscle, other smooth muscle will cause increase in the tone. जैसे यूटेरस, यूटेरस का मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, है ना, डेट्रोसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा. कंस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर that causes the urinary retention. Because of the contraction of detrusor muscle, because of the contraction of urinary sphincter, it causes the urine retention. Urine retention. Urine retention is also because of the
वेगल एक्शंस ऑफ मॉर्फिन, है ना। वेगल मतलब क्या, एसिटिल कोलिन लाइक एक्शन, यूरिन रिटेंशन करता है, याद रखना है, ठीक है। एक कंस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, कंस्ट्रिक्शन। नाउ न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर क्या एक्शन है, द एक्शंस ऑफ मॉर्फिन ऑन न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम। तो इट इनहिबिट, मॉर्फिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड, है ना, corticotropin releasing hormone, also decrease the plasma concentration of these follicular stimulating hormone, luteinizing hormone, है ना। follicular stimulating hormone का कम करता है, luteinizing hormone का कम करता है, ACTH भी कम करता है, राइट। इम्यूनो सिस्टम के ऊपर क्या एक्शन है मॉर्फिन का, सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी एंड पॉसिबल इन्फेक्शन, सुपर इन्फेक्शन, ससेप्टेबिलिटी फॉर अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है, डिक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट resulting to decrease in the temperature. So decrease in the metabolism caused by morphine decreases the body temperature, known as a, hypothermia. Now absorption, metabolism, elimination, absorption, distribution, metabolism and elimination of morphine. So when given orally, morphine is adequately absorbed and it is extensively metabolized during the first pass. 20 to 40% bioavailability is there. So bioavailability morphine का कम है. It can cross the placental barrier and it is also secreted in the milk. So that's why it can cause adverse effect in the fetus and infant. It is metabolized in the liver by conjugation with the glucuronide conjugation. Morphine is metabolized by glucuronide conjugation and there is generation of one active metabolite known as a morphine 6 glucuronide. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, morphine 6 glucuronide, है ना, which is a more potent than morphine, Again there is one more metabolite known as a morphine glucuronide, morphine 3 glucuronide, है ना. This metabolite is excitatory in nature और morphine क्या है, depressant है, ये क्या है, excitatory. तो morphine 3 glucuronide, है ना, M3G आप बोल सकते हैं, M3G. Morphine 3 glucuronide is a depressant. Morphine is a depressant, but the metabolite morphine 3 glucuronide is a stimulant, excitatory, and that's why this metabolite can produce or can induce the seizures, can induce the epilepsy. यहाँ पे याद रखना है, morphine and its metabolites they are eliminated through urine. ठीक है, याद रखना है, morphine 3 glucuronide is a excitatory or stimulatory metabolite of morphine. Morphine 6 glucuronide is also active metabolite of morphine, which is a more potent than morphine. ये याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके ऊपर तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, किसके ऊपर, morphine 6 glucuronide, which is more potent than morphine, which is active metabolite of morphine. Now, adverse reactions of morphine, है ना, देखो, intolerance, so it may produce occasionally tremors and delirium in the person. It can cause allergic reaction like pruritus, contact dermatitis, because morphine is a histamine liberator. ये क्या करता है, histamine release करता है. Morphine will release a histamine and produce a allergic reaction, anaphylactic reaction, and because of this also there is a decrease in the blood vessel is also repeated. CNS के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट है, इन द CNS it will produce dysphoria, mental clouding, vertigo, nausea, vomiting, headache, fatigue, paresthesia. Paresthesia मतलब क्या है, नमनेस. पैरास्थेसिया मतलब नमनेस. अगर आपने, है ना, आपके हाथ, है ना, आप अपने आप का हाथ बॉडी के नीचे सो गए, रख के सो गए, तो आपका हाथ सुन पड़ता है. पैरास्थेसिया मतलब क्या है ना, पैरास्थेसिया मतलब सुन पड़ना, है ना, नमनेस. Respiratory depression, morphine is a respiratory depressant. It will depress the respiratory center, याद रखना है. It can produce a constipation. Morphine produces a constipation, decreases the peristalsis. It can result in the intestinal obstruction in the old people. जो है ना, जो पुराने वाले जो बूढ़े लोग हैं उसमें क्या है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है.
abdominal distension increase the pressure in the biliary tract. यूरिन रिटेंशन कर सकता है, यूरिन रिटेंशन the old people due to यूरिन रिटेंशन इन द पेशेंट विद द प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी. इसको प्रोस्टेट कैंसर है, उसमें यूरिन का रिटेंशन करेगा. हाइपोटेंशन बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल वासोडाइलेशन एंड हिस्टामाइन रिलीज, है ना, ड्यू टू पेरिफेरल वासोडाइलेशन एंड हिस्टामाइन रिलीज, है ना. Peripheral vasodilation result in the hypotension, but histamine release result in the hypertension. Biphasic response. Now tolerance to the morphine. Repeated administration of morphine can result in the tolerance. Person who is tolerant to the morphine exhibit or shows cross tolerance with the other opioid analgesics. Okay. Drug dependence, very very important. आज कम से कम morphine का कम करना है ना. Drug dependence, है ना, ड्रग डिपेंडेंस. मॉर्फिन का ड्रॉबैक क्या है? मेजर ड्रॉबैक ऑफ मॉर्फिन, मेजर लिमिटेशन ऑफ मॉर्फिन, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मॉर्फिन, मेजर ड्रॉबैक, मेजर लिमिटेशन, मेजर ड्रॉबैक, मेजर डिसएडवांटेज, मेजर लिमिटेशन. क्या है? ड्रग डिपेंडेंस. इट कॉजेज द एडिक्शन. तो मॉर्फिन ड्यू टू इट्स यूफोरिएंट इफेक्ट, it is a causes drug dependence, it is a drug addiction. Morphine causes drug dependence and drug addiction because of its euphoric effect. Because of the euphoria produced by morphine, it makes morphine as a worst drug of ever. Morphine produces the sensation like trimming, sensation like turning in the stomach because of the rhythmic contraction and smooth muscle and anal sphincter. It causes turning in the mouth and feeling of warmth in the epigastrium, and flushing and sensation in the lower abdominal cavity. And some of the morphine addict, जो morphine का addiction करते हैं, जो चर्सी होते हैं, morphine addict होते हैं, they will morphine addicts as akin to sexual orgasm, and it is also known as a thrill or kick. ये जो एक्शंस है मॉर्फिन के, मॉर्फिन एडिक्ट विल डिस्क्राइब दिस एक्शन एज अ थ्रिल और किक. है ना, किक नाही बसली आतापर्यंत, कधी बसती काय माहित त्याला किक, अख्खा मारायला आलाय तरी पण किक नाही बसली. है ना, मतलब क्या, ये ड्यू टू यूफोरिया, है ना, सेंसेशन, है ना, वार्म सेंसेशन इन द गैस्ट्रिक एपिगैस्ट्रियम, फ्लशिंग, देन टर्निंग इन द स्टमक, है ना, देन इट इज अ मॉर्फिन एडिक्ट्स एज अकिन टू सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. मतलब उनको सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं वो, एंड दैट इज नोन एज अ किक और थ्रिल. है ना, देयरफॉर मॉर्फिन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर ओनली. मॉर्फिन किस में यूज़ करना है? टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर. है ना, मॉर्फिन एक तो इसमें यूज़ करना है टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर, और मोस्टली बाकी मिलिट्री के पास भी होता है. सो योर सिक्योरिटी फोर्स आल्सो हैज मॉर्फिन. नॉट रेडीली टू द अदर chronic pains, not ready to other chronic pains, not readily to the other chronic pains, should be used in the terminal stage of cancer. Now very very important, acute morphine poisoning. क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं इसके ऊपर. acute morphine poisoning और morphine poisoning क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं. IMP ना, IMP मतलब क्या? इम्पोर्टेंट, है ना, इम्पोर्टेंट है ये. इट ऑकर्स ड्यू टू द क्लिनिकल ओवरडोसेस, क्योंकि मॉर्फिन का ज़्यादा ओवरडोज दिया तो मॉर्फिन पॉइजनिंग हो सकता है, या फिर एक्सीडेंटल मॉर्फिन पॉइजनिंग हो सकता है, या फिर सुसाइडल इंटेंशन, या फिर होमिसाइडल इंटेंशन. मर्डर करने के लिए मॉर्फिन बहुत ज़्यादा दे दिया, या फिर सुसाइड करने के लिए मॉर्फिन ज़्यादा ले लिया. जैसे कबीर सिंह, है ना, कबीर सिंह, है ना, ये 60 मिलीग्राम डोज ऑफ मॉर्फिन इज यूजुअली टॉक्सिक. 60 मिलीग्राम मॉर्फिन ले लिया तो टॉक्सिटी होता है, बट नॉट अ फेटल. मतलब 60 मिलीग्राम से टॉक्सिक सिम्टम आ सकते हैं, आपको सिम्टम आ जाएंगे टॉक्सिटी के, बट आप मर नहीं सकते. ठीक है, 60 मिलीग्राम डोज इज टॉक्सिक बट नॉट लीदल. ए डोज ऑफ 250 मिलीग्राम मॉर्फिन अगर ले लिया तो आपका विकेट गिर गया. 250 milligram is a fatal dose, and morphine poisoning is characterized by symptoms
क्या है मॉर्फिन पॉइजनिंग के? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पिन पॉइंट प्यूपिल, साइनोसिस, मतलब आपके जो स्किन है आपकी नीली पड़ जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन कम होगा, है ना। रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, आपका यूरिन आउटपुट कम होगा, हाइपरटेंशन, शॉक, कोमा, कन्वर्जेंस, है ना, बाद में आपका विकेट गिर जाएगा, आप मर जाओगे। ठीक है, मतलब ये पॉइजनिंग के सिम्टम्स है, कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पिन पॉइंट पिपिल, साइनोसिस, reduced body temperature, reduced urine output, hypertension, shock, coma, convulsion, है ना। Convulsions can occur in the infants and death is usually due to the respiratory depression. आपका डेथ क्यों होता है? ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, मॉर्फिन पॉइजनिंग कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। देखो, अगर पेशेंट को मॉर्फिन पॉइजनिंग होगा है तो उसका क्या है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कम होगा, सप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा चीज क्या है कि पिन पॉइंट पिपिल, पिन पॉइंट पिपिल, रिड्यूस्ड टेम्परेचर, मतलब उसका बॉडी पूरा ठंडा पड़ जाए, रिड्यूस्ड टेम्परेचर, है ना, पिन पॉइंट पिपिल, डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, साइनोसिस, है ना, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन, शॉक, कोमा एंड डेथ, खतरनाक, है ना। नाउ अगर मॉर्फिन का पॉइजनिंग हुआ है तो क्या है भाई? स्पेसिफिक एंटीडोट। So specific antidote for morphine poisoning is naloxone, nalorphine or nalbuphine, naloxone, nalorphine, nalbuphine. These are the three specific antidotes. Naloxone is a opioid antagonist. Nalorphine is opioid antagonist. And nalbuphine is also opioid antagonist. So naloxone, nalorphine, nalbuphine. These are the antidotes. So naloxone is an intravenous given and it is having short duration action. Nalorphine is oral and nalbuphine is also intravenous. So specific antidote, they will produce a dramatic reversal of respiratory depression caused by morphine. तो ये एंटीडोट देना है। बाकी जनरल नर्सिंग केयर, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जनरल नर्सिंग केयर, है ना, बस इतना ही नहीं ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट और है, जनरल नर्सिंग केयर, सिम्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट, then morphine antagonist should be used cautiously। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीडोट फॉर मॉर्फिन ऑलरेडी आपने एक बार देखा है, बट यहाँ थेरापीटिक यूजेस ऑफ मॉर्फिन, वही मॉर्फिन का यूज क्या है ना, इतना सारा कार्यक्रम देख लिया, उसका यूज क्या है? तो थेरापीटिक यूज ऑफ मॉर्फिन, थेरापीटिक यूज ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन इज अ पोटेंट एनाल्जेसिक, मॉर्फिन इज अ पोटेंट एनाल्जेसिक। क्या है एनाल्जेसिक? यूज्ड इन द पेन कॉज्ड बाय मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पेन कॉज्ड बाय फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, बर्न्स, टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर, pulmonary embolism, pain due to pulmonary embolism, acute pericarditis, spontaneous pneumothorax, can be used in the treatment of biliary and renal colic, combination with the atropine। तो biliary and renal colic में atropine के साथ में देना है। क्यों? क्योंकि by its analgesic action it will decrease the pain, but because of its spasmogenic action it will increase the renal and biliary spasm, so that's why atropine अगर देंगे तो atropine will decrease the spasm। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर में यूज करते हैं, पल्मोनरी इडीमा में यूज करते हैं। इन द एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर, pulmonary edema, it is a sedative in presence of severe pain। एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी यूज कर सकते हैं टू डिक्रीज द टू प्रोड्यूस द कॉन्स्टिपेशन इन केस ऑफ डायरिया, so it is anti-diarrheal also। But nowadays morphine is only used for terminal stage of cancer। आजकल मॉर्फिन सिर्फ कैंसर के लास्ट स्टेज में जो पेशेंट है, जो मरने ही वाला है, तो उसका हंसते हंसते मर जाए, है ना, तो हंसते हंसते मर जाए इसलिए उसको मॉर्फिन देते हैं, है ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है अभी, है ना। टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर में ट्रिमेंडस पेन होता है, तो यूज द टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर टू डिक्रीज द पेन। कैंसर के पेन के लिए रिजर्व हुआ है, तो मॉर्फिन इज रिजर्व ओनली फॉर टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर्स and it is also used in the मिलिट्री में यूज करते हैं। अगर किसी को गोली लग गई तो उसको पेन डिक्रीज करने के लिए। नाउ प्रिकॉशंस विद द मॉर्फिन थेरेपी, प्रिकॉशंस विद द मॉर्फिन थेरेपी, सो यू हैव टू यूज
कॉशियसली इन केस ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सीओपीडी जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यू हैव टू, है ना, you have to take precautions in the patient who is suffering from COPD, chronic obstructive pulmonary disease, because morphine क्या है, morphine is a respiratory depressant, so you have to use carefully or avoid morphine in the patient with the COPD, patient with the myxedema, and older patient and infant patient. So avoid morphine in the old people and infants. Avoid morphine or contraindicate. It should not be used, or it should be avoided or contraindicated in case of head injuries, because head injuries में देना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मॉर्फिन शुड बी contraindicated in case of head injury, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है GPAT Niper। It should be contraindicated, it should not be used in the case of head injury because it is a respiratory depression, it causes respiratory depression and patient may die। हेड इंजुरी में नहीं यूज करना है ना। It increases the CSF pressure also and stimulates the spinal cord also. Also decreases the respiration. That's why it is not used in the head injury. The patient with the severe impairment of liver and kidney function उसमें भी use नहीं करना है। This is the precautions or contraindications of morphine therapy. Now next we'll see. Next drug we'll see tomorrow. कल अपन देखेंगे बाकी ड्रग के बारे में, क्योंकि आपका फ्लो कम हो चुका है। लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, तब मुझे इंटरेस्ट होता है पढ़ाने को ना। तो आपको क्या है कि 1 आवर के बाद में आपका एनर्जी खत्म हो जाता है और आप निकल जाते हो। दैट शुड नॉट बी थिंग। आपको सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो 2 आवर्स 3 आवर्स आपको कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। यू हैव टू इंक्रीज योर कैपेसिटी 2 आवर्स 3 आवर्स, otherwise it is not easy. Otherwise it is not easy. You should increase your capacity. I hope you have understood. है ना। और एक 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 छोटा सा भूल गया मैं, लास्ट में कल देखेंगे। कल यहाँ पे एक चीज रह गया था बोलना, तो अगर आपको चाहते तो अभी बोलिए। सो रिमेंबर, सो in the antipsychotic drugs or neurodegenerative, ना we have seen the neurodegenerative disease, आपने देखा था ना neurodegenerative disease। we have seen this disease, neurodegenerative diseases, है ना। तो इसको भी कल ले लेंगे अपने, आज भूल गया मैं वो बाबा के चक्कर में, तो कल इसको ले लेंगे अपन। न्यूरोडेजेनरेटिव ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एक उसका बाकी है, एक कौन सा, विल्सन डिसीज, उसके ऊपर GPAT 24 में क्वेश्चन आया था, तो वो बाकी रह गया है। मतलब कल मैं स्लाइड में था नीचे, लेकिन भूल गया मैं। तो विल टेक टुमारो पार्ट सेकंड, ठीक है। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द सेशन। समझ में आया होगा तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, कुछ डाउट्स है तो वो पूछिए। If you have any doubt, you can ask and write down yes in the comment box if you have understood.